Hanif channel. OpTv is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven. OpTv की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled at kabafusion.com for more information. अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं। जिंदगी के हर शोबे में उनका किरदार शानदार है। वतन से दूर अमेरिका में तालीम हासिल करने के साथ अपने करियर की जानिब तवज्जो देते और मतलूबा मंजिल की तरफ गामजन होते हैं। ऐसे मुल्क में जहां मौके, वसाइल और जराए हों और इस बात का खदशा भी ना हो कि उनके आगे बढ़ने में कोई रुकावट खड़ी की जाएगी, वहां पाकिस्तानियों को तरक्की से रोका नहीं जा सकता। आज मैं ऐसे ही एक शख्स की कहानी आपको बयान करूंगी जिसने 12 साल की कलील मुद्दत में अपनी कंपनी की कीमत $1 बिलियन से ज्यादा कर दी है। काबा फ्यूजन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर सोहेल मसूद ने मुसलसल जद्दोजहद से कामयाबी की मंजिलें तय की हैं। अल्ट्रा केयर बनाने के बाद उन्होंने क्रीसेंट केयर बनाई और अब काबा फ्यूजन अमेरिका की दूसरी बड़ी होम इन्फ्यूजन कंपनी बनकर उभरी है। हाल ही में एक बिजनेस डील के तहत इंसुलिन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नोवा ने भी काबा फ्यूजन के साथ इल्हाक किया है। इस इकदाम के बाद काबा फ्यूजन $1 बिलियन से आगे बढ़ गई है। And also a very sad day because I see the name of Abdul Jabbar Memon Saab. He told me about that. I'm very proud that Dr. Sohail Masood की generosity और की दरियादिली ने ये मौका दिया कि हमने ये बनाया। और ये अच्छा है कि देखें काउंसिल जनरल का काम ये नहीं होता किसी पासपोर्ट रिन्यू कराना या पावर ऑफ अटर्नी देना, बहुत सी चीज़ें होती हैं उनकी। लोकल कम्युनिटी से एंगेजमेंट रखना और एंटरप्रेन्योर से मिलना और अपने लोगों को इनकरेज करना। एंड लेट मी टेल यू डॉक्टर सोहेल मसूद दिस इज हिज लैंड, लॉस एंजलिस. He supported the media
where I am standing today because of him. OpTv, when people turned on, he stand up. And you told that when camera move, that politician move. That's the media in America. And definitely also supported long time one of the leading English weekly Pakistan link Dr. Hanif Mansoori साहब है मौजूद है, you know, Urdu English both, and definitely Fatima is a program director since many years. सफ़ीर पाकिस्तान जो नाम और सब चीज़ है वो क्रेडिट को जाता है कि आज पूरी अमेरिका में जिन्होंने जावेद अनवर और ताहिर मसूद और ताहिर जावेद और जाद अहमद जैसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जो कम्युनिटी को बेनिफिट कर रहे हैं, यू नो, दैट्स अ मीडिया जॉब. हमारा जॉब होता है कि हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, बाकी दे आर बिलोंग टू द कम्युनिटी. So when Sohail bhai came and I was talking, he told me that when I met him first time when he's starting the Kaaba Fusion, so he told me, because now you have to join me, okay, and we have an excitement and this company is going to go. Okay. So I said, look Sohail bhai, this company is going to be one day $1 billion company, the concept you have. And we travel a lot, different state and everything, hard weather. But everybody says that when the company crosses $1 billion. But he said it. For sure. He said, yeah. Yeah, Waqar said it. Yeah. तो जब सोहेल भाई का कॉल आया और मेरी प्रेस रिलीज आई मेरे पास कि दिस इज द डील डन, ही वाज वर्किंग ऑन द डील, आई नो दैट, बट इट इज नॉट इजी टू मेक अ डील विद द लार्जेस्ट इंसुलिन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ओके, एंड लॉट ऑफ legality things, and then deal done, mashallah. He really deal breaker, mashallah, and he always be very calm and quiet in his office in Boston and working on this project. And when I saw the news, I was, wow, now the company become over 1 billion plus with the valued and everything, and the second largest in the nation. Inshallah, we will be the number one as a home infusion company, Dr. Masood. Privately owned number one. Privately owned number one. Publicly owned, yeah, number two. Yeah. Jamal Saab, you want to say something? Ji, bilkul, it's really, I think every Pakistani who lives here, especially all the Pakistani Americans, are very proud of this fact that you have just crossed that bridge which a lot of us are dreaming about. So congratulations, and Allah may give you much more and more. And of course, it's timingly, like, you know, right now a lot of people have a very different way of looking at Pakistan and Pakistani Americans. I think this brings a totally different flavor that, you know, Pakistanis come here, they work hard, and they achieve what a lot of people can't even think of. So we are all so proud of you, and may Allah, you and your entire family should be blessed with this. And I can't say this anymore, that you've been so helpful to every organization, including Chamber of Commerce, Grand Alliance, all the organizations we have. Urdu Markaz, Pakistan Link. Yes, name it. Urdu Time, Here. And I think this is what, like, the roadmap should be for all the other Pakistani Americans who are doing business here, not only to look after themselves and their family and their businesses, they should look after their own people as well. And you are a clear example for that. So we all thank you and congratulate you on that. There is Hanif Mansoori is a very interesting person, and always Sohail bhai talk very high about him. And definitely he run the leading English weekly Urdu both, and he also run many organizations. He's a part of Chamber of Commerce. By the way, Sohail bhai, let me tell you, Chamber of Commerce produce brilliant people. That's true. Adnan Khan was the president of Pakistan Chamber of Commerce. He trained there. Then Jamal is a president. Harib bhai is a president Chamber of Commerce. Fawad is the chairman of the Chamber of Commerce. You know, so Chamber of Commerce. He's our chief patron. He always the chief patron of the Chamber of Commerce. Association with Sohail bhai, Pakistan Link, Urdu Link, Urdu Markaz, जिसके आबदा अहमद मौजूद हैं, रुबीना फारूकी साहबा, समीन फारूकी मौजूद हैं, जमाल ख्वाजा साहब ग्रैंड अलायंस के प्रेसिडेंट, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान लिंक के प्रेसिडेंट, इतनी सारी तंजीमें हैं जो कि डॉक्टर सोहेल ने स्पॉन्सर किए. आई नो डॉक्टर सोहेल इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने कितने पैसे बनाए हैं, कितनी दौलत बनाई है, लेकिन मुझे एक चीज़ का बिल्कुल 110% यकीन है कि इन्होंने बहुत सारी नेकियां बनाई हैं, नेकियां कमाई हैं. जितनी नेकियां, इतनी ये एक सीरियल फिलैंथ्रोपिक
philanthropist हैं. He supports so many charities, so many causes, so many. Pakistan एक cause है, लेकिन उसके अलावा इतनी causes हैं. I am personal beneficiary of his generosity, kindness. So 1988 में इन्होंने USC से graduate किया, अपना PhD किया in pharmacy, और उसके 4 साल बाद इन्होंने जो पहली अमेरिका में जो पहली होम इन्फ्यूजन फार्मेसी थी वो उन्होंने फाउंड की. और उसके बाद रेस्ट इज स्टोरी. क्रेसेंट, यू नो, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट, ही सोल्ड इट टू वॉलग्रीन. अब काबा फ्यूजन इज द लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड इंडिपेंडेंट home infusion company. He has won so many awards. He's got this lifetime achievement award from the National Home Infusion Association, which is a great honor for not just him but for all Pakistanis, because he is representing our community. He has won the Ernest and Young Award twice as the Entrepreneur of the Year. The business, Los Angeles Business Journals called his company, 100 fastest growing companies. But all of this is just fine. But one thing I just remember, and with your permission, so I'd like to share. हमने पाकिस्तान लिंक में एक आर्टिकल, जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको करोड़ जन नसीब करे, तो पाकिस्तान लिंक ने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान लिंक उर्दू लिंक ने, और उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी याद है. वैसे इनकी वालदा का ताल्लुक़ जो रामपुर से था, यूपी से, और यूसुफजई पठान इनका लीनियज है. और जो पठानों की हम समझते हैं ना, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो इनमें सारी है कि जो अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं. जो आपको पता है उनकी ट्रेडिशंस हैं, वो इनमें बखूबी हैं. पर मैं जो आपको वाक़या बताना चाह रहा हूँ, उस आर्टिकल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग थी जो मुझे बड़ा उसने टच किया. जब इनके फादर का इंतकाल हुआ, जो कि रेलवे पाकिस्तान के चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर थे, तो बहुत यंग फैमिली थी. इनकी वालदा की भी उम्र मेरे ख्याल में 37 की थी वो. तो उस वक़्त पे लाजिमात है वो वाहिद कमाने वाले थे. तो जो प्रोविडेंट फंड था, उससे सब ने मशवरा दिया कि एक घर ख़रीद लीजिए एंड हैव अ हैप्पी लाइफ. उन्होंने ये करने की बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल टेक ऑल ऑफ दिस मनी एंड पुट इन द एजुकेशन ऑफ द किड्स. सबसे बड़ी बात है, उन्होंने वो अपना, हाँ, कहते थे कि बहन तुम्हारे पास पैसे तू एक घर खरीद ले. मम्मी कहती थी नहीं, मैं एक घर नहीं बनाऊंगी, 8 बनाऊंगी. उनका मुराद ये कि 8 बच्चे जो हैं वो अपने अपने पैरों पे खड़े हैं. माशाल्लाह. और मैं बस यही कहूँगा आखिर में कि आई कैन ओनली से कि मैं सिर्फ दुआ ही दे सकता हूँ सोहेल भाई को कि अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशहाली दे, और बस दिल से दुआ निकलती है इनके लिए. वाकई में अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे. बहुत शुक्रिया सर. ज़रूर. अभी सब ने जो बताया सोहेल भाई के लिए कि कितने अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, और माइलस्टोन जो है $1 बिलियन कंपनी कोई बच्चों का खेल नहीं है, और वो भी अचीव किया उन्होंने वो सब कुछ. और जैसे बताया सब ने कि उनकी शख्सियत कैसी है. लेकिन मैंने एक और तरीके से जो मैं लोगों को जज करता हूँ, सॉरी, आई एम वेरी जजमेंटल. तो मेरा ज़िंदगी में हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोगों से और एवरी वॉक ऑफ लाइफ जो है उनसे रहा है. लोगों में थोड़ा सा होता है कि उनकी अप्रिसिएशन हो, और वेरी नेचुरल. लेकिन मैंने सोहेल भाई को देखा है, नेवर एवर ही इवन सीम्स लाइक ही थिंक अबाउट इट. और वैसे के वैसे ही एक दिन मैंने इनसे कहा कि वो, क्योंकि ये अक्सर आते हैं वहाँ बॉस्टन से और वहाँ ठहरते हैं सेरिटोज़ में, तो वहाँ पे मिल गए थे सोहेल भाई. तो ऐसी कुछ होने लगी, तो मैंने कहा सोहेल भाई एक फ़िल्म लगी हुई है, वो जाके मतलब आप यहाँ के लिए बोर होते होंगे, वो फिल्म है पाकिस्तानी, बड़ी अच्छी है ये. तो जब मैं वहाँ पहुँच के बैठने लगा तो पीछे देखा सोहेल भाई अकेले बैठे. आई मीन ही कुड हैव टेकन बहुत से लोग, मतलब ही इज़ जेन्युइनली हिमसेल्फ, सो कंपोज्ड, नथिंग सीम्स लाइक अफेक्ट हिम के, और या इनमें कोई डिज़ायर हो कि मुझे किया जाए. आज की भी तकरीब मेरा ख्याल है वक़ार की इंसिस्टेंस पे हुई होगी, क्योंकि वक़ार रियली इनके साथ बहुत ज़माने से रहे हैं, और इनके
बहुत करीब है। तो सुहेल भाई जैसा आदमी मैंने वो सैकड़ों में हज़ारों में नहीं देखा। ये बड़ी हमारी इंस्पिरेशन की बात है, और जिस तरह से हमारी कंट्री को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और माशाल्लाह की और तरक्की हो, और जिस तरह से इन्होंने इतने एफर्ट्स किए हैं। सोहेल भाई, आपने जो स्टोरी सुनाई ना यूएससी में आप बस में जाते थे फिगरोवा, तो आई डोंट नो इफ यू नो दैट माय फर्स्ट जॉब वाज एट यूएससी इन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, और यूसीएलए में जब जाती थी तो मैं भी बस लेके जाती थी सनसेट और फाउंटेन से फॉर 1 year, एंड देन सेकंड ईयर आई बॉट अ car for $1,500 without an AC, and we rode that car. We drove that car for 3-4 years. But and USC, I was there in 1983, so you were probably hanging out there too. Yes. And then after 2 years, I married a car. So I didn't become a billionaire, but I am married to a billionaire, Hart, a person who is like a brother. Yeah. You are like a brother to him. Yes. And Alhamdulillah, we are all so proud of you. Your accomplishment, it's unmatched. It's totally unmatched. Every time we see all the posts, any post on Facebook about Kaaba Fusion and you, I cannot resist sharing it. I cannot resist bragging about it because it's an accomplishment of our own brother. And you have done so much for everybody. I know you have done a lot for your family, but other than that, you have done a lot for the community, and we are really proud of that. And may Allah continue to give success. सबसे पहले तो सोहेल भाई मैं आपको मुबारकबाद दूंगी आपकी कामयाबी, और वाकई आप वेल डिज़र्व हैं। जैसे आप सब लोगों के सबके साथ कोऑपरेट करते हैं, सबकी मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन को हमको सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैं तकरीबन रोज़ आपको याद करती हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं सरीटोज़ में रहती हूँ और मेरा अक्सर गुज़र वहाँ से होता है आपके काबा फ्यूजन से, और मैं देखती हूँ और आपकी याद आती है और आपके लिए दुआ निकलती है। Now I would like to give the baton to Mr. very energetic, very young diplomat, because you know that sometimes I feel working with Shiraz, I feel different kind of feeling, because I work with Najm Saqib Khan, Gul Khan Janjua, and many ambassadors, you know, with the diplomats. And in Saudi Arabia, I work many European diplomats, you know, and I see that young gentleman, he worked through the system very methodical and very systematically. I really like that, and that's supposed to be our diplomats. You want to say something today in the honor of our friends? Yes, absolutely. First of all, everyone, wonderful words for a man who deserves it, all of it, the words that you used. And Sohail Saab, all I want to say is, after all that they've said, is that we're proud of you. Thank you. And your accomplishments speak for themselves. It is phenomenal what you've achieved. And I hope that you serve as an inspiration, not just for the people around you and all the people in this room, but for the millions of Pakistanis, not only back home, but here as well. Thank you. Who will be inspired by what you achieved. Thank you. So thank you so much. Thank you very much. For being here. Our commercial counselor, definitely he is a businessman. Yeah. You have a direct link with that business. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आई एम सो इम्प्रेस्ड, योर अचीवमेंट इज सो अमेजिंग, एंड सीजी साहब हैज आल्सो पॉइंटेड आउट, आई थिंक यू सच अ बिग इंस्पिरेशन, एंड I would and we would try we could get you in touch with, like we could arrange all these, we could actually get students in touch with you, so you're such an entrepreneur के लिए सबके लिए आप इतनी बड़ी inspiration है, and many congratulations on your achievements. Thank you. So now I'd like to present a word. Yes sir, आपके मुबारक हाथों से, because he is a diamond. Okay. So thank you very much. Thank you. So this award presented by the Pakistan American Chamber of Commerce and the Grand Alliance for Pakistan. Thank you. President is here, I'm the chairman, and the vice chairman, co-chair Fatma Khan, you know, and Secretary. And this organization is just a brand of different brands, because a big community, they work different styles में. बहुत सी चीज़ें लाइफ की ऐसी होती हैं कि जहाँ हमें सोचना पड़ता है कि भाई किस तरह कहाँ से हम चले कहाँ पहुँचे,
तो ज़िंदगी जो है वो सफ़र का नाम है, आप सफ़र ही कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं कि डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन जो फ़िलहाल जहाँ मैं अपनी लाइफ के मोड़ पे खड़ा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह हमें इतनी बरकत देगा। आज से 30 साल 40 साल पीछे देखते हैं, हमारे अबू के इंतकाल के बाद हम लोग 3 कमरों के घर में थे, गड़ी शॉप में रहते थे, फिर गुलबर्ग चले गए, लेकिन 3 कमरे थे। मुझे याद है कि 1 महीने में 1 किताब मैं लेता था उर्दू की, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो मेरा नाम मंगो और सारी जो किताबें थी, भूत बंगला और ये वो, तो 1 किताब 1 महीने में 1 अफोर्ड कर सकता था। मैं उर्दू बाज़ार जाता था बस पे चढ़ के, क्योंकि कुछ ना गाड़ी थी ना मोटरसाइकिल थी, मैं वो किताब लेता था और वो बस में पढ़ता हुआ आता था, और वो 1 महीना एक किताब पूरी पढ़ता था मैं। तो मुझे सारी किताबें रट गई थी, क्योंकि एक दफ़ा 1 महीने में 1 किताब लेता था। अब माशाल्लाह ऐसा है कि अच्छी बड़ी लाइब्रेरी है, घर में सब तरह की किताबें हैं, लेकिन वो नहीं भूलता टाइम। और वो क्या करता है कि वो इंसान के पाँव जो है वो ज़मीन पे रखता है, आप उड़ना नहीं शुरू हो जाते। आपको पता है कि भाई जो है अल्लाह करे ऐसे ही चलता रहूँ आखिरी दिन तक, चाहे मेरे दोस्त यार हैं, भाई बहन हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी डेफिनेटली, हमारी कम्युनिटी एक ज़माने में ज़रा थोड़े टफ टाइम से आप लोगों, लेकिन मैंने जो कोशिश की वो की कि उसको भूल के मैं सही काम करता रहूँ। तो वो हमें ये बस करना पड़ेगा कि हमें वो जो एक राह लगा दी अल्लाह मियाँ ने, जिसको जिम्मेदारी दे दी है, जिसको दे दिया है जो भी देना है, वो इसी तरह ही करे तो सही है। वो अपनी एक छुप के 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठना बड़ा आसान काम है। सुहेल भाई का कहना है कि लोग आई डोंट हैव अ टाइम बट आई हैव मनी टू सपोर्ट, यू डू गुड जॉब, आई एम देयर फॉर यू। तो मैं अमेरिकन जो लोग होते हैं ना जिनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आई बिलीव इन 3 T's। जब चैरिटी का काम आता है, आई बिलीव इन 3 T's। One is time, T for time. I don't have time because I'm running a big company. Second is talent. I don't have a talent like you guys to run organizations. I'm not going to run the organization. Third is treasure. So you can write the check. तो मैं कहा वो आप मुझे बता दिए करें, वो मैं check आपको दे दूँगा। I have no time, no talent, but I have a alhamdulillah capacity. Thank you very much. First of all, आज़म साहब कि आपने अपना valuable time दिया, और definitely this is the government of Pakistan. So you are here on behalf of the government of Pakistan. Thank you. Definitely presented you the awards, honoring you, and definitely जो आपने दीवार देखी है, इस पे आपका नाम यहाँ लिखा हुआ है, और ये हमेशा रहेगा। आज शराज यहाँ है नहीं है, कल दूसरा आएगा वो भी देखेगा कि डॉक्टर सुहेल मसूद की वजह से ही आज यहाँ पे इतनी कलरफुल वॉल है, और रिकग्नाइजिंग पाकिस्तान एंड डेफिनेटली इरफान मुर्तज़ा का भी कमाल है कि he put this together very well. जी, महमूद साहब की नेकी थी, उन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, हम लोगों ने तो आगे बढ़ाया उसको, लेकिन नेकी नहीं की थी इसमें। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत तेज़ी से अमेरिकन सियासत में आगे बढ़ रहे हैं। इस साल कई लोगों ने कांग्रेसमैन, मेयर और सिटी कौंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लिया। कुछ लोग कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए, लेकिन इसका आगाज़ हो चुका है। एक ऑर्गेनाइजेशन है पाक पैक, जो अरसे दराज से कायम व दायम है, जिसको पहले अपना ने इस्टेब्लिश किया था और सऊद अनवर उसके रहनुमा थे और लीडर थे, जिन्होंने पाक पैक को आगे बढ़ाया, जिसमें हिलरी क्लिंटन, जो बाइडन जैसे लोग भी आ चुके हैं और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन इस साल इसके जो सदर हैं जनाब वो असद मलिक साहब हैं, जिनका ताल्लुक मिशिगन से है। इज़ ए रेनाउंड एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन और उनकी लीडरशिप में वाशिंगटन डीसी के बहुत ही मारूफ होटल हयात एजेंसी में पाक पैक की तकरीब हुई, जिसमें कांग्रेस में इनकी बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और उसको कामयाबी से हमगार गए, जिसमें तकरीबन लगभग 40 के करीब कांग्रेसमैन आए और उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया, जिसमें पाकिस्तान ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाक यूएस रिलेशनशिप पे जो है बातचीत की गई और बहस की गई, जिसमें हमारे कैलिफोर्निया के मारूफ बिजनेस लीडर इमरान शरीफ ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने पाक पैक को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा डेफिनेटली डैलस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, हर जगह से लोग आए और इसमें शिरक हुए और उसको कमी भी हमकिनार किया। आइए देखते हैं हमारे दोस्त जनाब वाशिंगटन डीसी जनाब आसिफ सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी वाशिंगटन इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है और पाक पैक का इवेंट हो रहा है। पाक पैक के प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त असद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज का इवेंट ज़बरदस्त हुआ और हम आपको उसकी झलकियाँ भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ सवाल सबसे पहले असद मलिक साहब से पूछते हैं। असद मलिक साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद मलिक साहब, आप बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ, तो मैं चाहूँगा कि आज के इवेंट की कुछ ख़ास बातें बताएं कि एक तो ये कि ये इवेंट क्यों होता है, जो नए देखने वाले हैं उनको ये पता चल जाएगा, और पाक पैक और पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन में पाक पैक का क्या रोल होता है। So this event we have is an opening reception event. We invite all the congressmen. It's actually one of the largest events in Washington. We had over 40 congressmen come to talk about Pakistan-U.S. relationship, Pakistan-U.S. relationship, along with what can be helped with the flood situation, aid for terrorism, trade, investment into Pakistan, and those are the issues that we talk about with the congressmen and how they talk back to us. Pak Pak's role, that is its role, to build a better relationship between the United States and Pakistan, and we do that through these efforts of what we can do with the diplomatic side, as well as through from trade and investment within Pakistan. अच्छा, हमने देखा कि बहुत सारे कांग्रेसमैन आए, तकरीबन 40 के करीब हमें पता चला कांग्रेसमैन ने आज पार्टिसिपेशन किए। हम कुछ लोगों की तो आपको झलकियाँ दिखाएंगे उसमें से। आज की क्या इम्पोर्टेंट कांग्रेसमैन क्या कहना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान से किस किस्म का रिलेशन रखना चाह रहे थे? They all feel that Pakistan is a very important strategic ally of the United States, and that is what they wanted to relay, that message that that we are friends. We've been friends for 75 years, and we want to continue that relationship moving forward. And inshallah, a lot of these congressmen that came here will inshallah be visiting Pakistan also within the next year as well. अच्छा नाज़रीन, हमने कुछ प्रोग्राम कवर किया है, कुछ स्पीचेस कवर की हैं, तो आप झलकियाँ देखें और असद मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। आसिम सिद्दीकी। Thank you so much, Dr. Salim, and thank you all for being here. One of the wonderful things I have in Iowa is, as a former director of the Department of Public Health, I was very instrumental in the J-1 visas and had the pleasure of bringing people from Pakistan and India to Iowa to practice. So to all my fellow physicians, thank you so much for coming here, being willing to relocate, go through all the very difficult process of getting licensed to practice in the United States and filling that void that we have, throughout our country and especially in rural parts of our state. So thank you for that, and the relationship that we all have, and the desire that you have to see, markets and capitalism and the ability to change your circumstances no matter where you come from. It's part of what drives people to the United States, and one of the things that we want to see remains a very vital part of our country. And your addition to that is helping us to maintain democracy and capitalism. So thank you so much for that. I know you've got other speakers, so I won't take long. I'd like to welcome Congressman Chet Bergman. He represents the Michigan 1st Congressional
District since 2017. He serves as the House Armed Services and House Veteran Affairs Committees. Welcome. Thank you. Well, you know, since Marionette spoke without a mic, I'm a Marine, so I come with a built-in microphone. If you want me to dial it down, I will. First of all, as I look around the room, what I see in so many cases, whether you're an elected official or one of the members of POCPAC, I see a lot of friends. People who I met in Michigan a long time ago. I'm not going to call out Dr. Malik, but I will call, if I never had a brother, but if I had one, it would have been Dr. Malik. But so many of you have been so gracious over my rough short 6 years in Congress to either host me in your home, whether it be in Dallas, whether it be in Michigan, to dialogue about what issues were important to you and what updates I could provide to you on what kind of things we were trying to do here in Washington, D.C. And if I've said this before, I will say it again, because the only thing I feel bad for the American people for is you do not see every day rank and file Democrats and Republicans working together all day, every day, trying to hash out good policy and good law. That's what makes us who we are as a country. Because whether you were, if you are an American, your family came here from somewhere at some point. And we are truly that melting pot in the world that is the beacon of freedom, the beacon that other countries, but especially the people who populate those countries, strive to be. We can never, ever, ever let our friends, our allies, or our citizens down when it comes to government doing the right thing for the right reasons. Having said that, I'm proud to be among you. I'm proud to just know all of you, and I look forward to the next time, whether it's Dallas or Michigan or some other event that you all invite me to, because I look forward to, and I'll admit here a little selfishly, you all have the best food I have ever had at an event. So thank you, and let's celebrate. Thank you. Just going to go a little bit out of order. Congresswoman Chu is going to be introduced by Dr. Imran Sharif. Please, if you come up to the podium. Thank you so much, everyone, for joining us, and I want to congratulate POCPAC team for organizing a wonderful event. I want to introduce my really good friend from California, District 28, Judy Chu. And before I talk about her achievement, I really want to share our sincere apologies and our prayers for the people of Monterey Park. Judy Chu was the mayor of Monterey Park, council member, and now the congresswoman in the same district. And there was an unfortunate event happened on the day of celebration, which was the Chinese New Year. And there was unfortunate 11 casualties and more than 10 injured. So our sincere apology and our well wishes for the people of Monterey Park. So Judy Chu is a member of Powerful House Ways and Means Committee and Subcommittee on Health and Small Businesses. And she has done a lot of great things for CA28, and she is a strong supporter of Pakistani community. Every time we need anything in California, she's always there for us. So Judy. Well, thank you so much. Imran is such an incredible leader, actually, in Southern California, and very, very active with the Council of Pakistan and other organizations that are very important over there. Yes, I represent
a district in that includes Monterey Park, California. There was just on Saturday a mass shooting, and so actually I have a lot to take care of right now, so I'm going to just be here very briefly, but I did want to stop by. I think it's so great that you are involved in politics, that you are making your voices known through this PAC, and that your presence is felt here on Capitol Hill. I do have to say that in Southern California, I'm proud of our very large Pakistani community, and in fact, I just attended an event where the sister state relationship between Punjab and California was established. And yeah, it was a wonderful event. There was an MOU signed and everything. And there is a reason for this sister state relationship. Punjab is the largest province of Pakistan. California is the largest state of the U.S. Punjab has a very active agricultural industry. And of course, in California, we have Central California, which produces so much of the produce of this area. And you have Lahore, which is a cultural center, yes. And guess what we have? Hollywood. So it's just another example of the close relationship that we can develop. And I just told all of them and the Pakistani delegation that I will do everything in Congress to make sure that that relationship thrives and that we make sure that it is a close one. Thank you so much. I'd like to introduce our president of our BACPAC, Asad Malik, to the podium, please. Thank you. I'm honored to introduce a great man who is a fellow Michigan Wolverine. Go Blue! Go Blue! He is in Arizona. He was the mayor of Phoenix, and now the congressman from that area, Greg Stanton. And I want to thank Congressman Kildee for putting him just now onto the Foreign Relations Committee. So that is his new committee assignment. So, but I'd love to welcome Congressman Greg Stanton. The Fiesta Bowl in Phoenix together. Darn it! Well, it's a tough game to TCU, but go Blue. Next season, we're going to get them. I appreciate it. Yeah, Michigan is way overrepresented in this room, isn't it? When I was mayor of Phoenix, we had a very fast-growing Pakistani community, and we want to keep growing. We're fortunate, like Michigan, to have such a large and important community. I don't know if Judy Chu has left the room, but it is an honor to serve. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong.
And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always